പാർലമെന്റ് കവാടത്തിലെ കയ്യേറ്റത്തിൽ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നാഗാലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള വനിതാ MP ഫാങ്ഗോൺ കോണിക്കിനോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത്. വനിതാ MP-മാരുടെ അന്തസ്സ് സംരക്ഷിക്കാൻ സഭാധ്യക്ഷന്മാർ ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ വിജയ് ഹക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പാർലമെന്റിൽ നടന്ന സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായി ഡൽഹി പോലീസ് ഉത്തരവ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. പാർലമെന്റിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ BJP MP-മാരെ തള്ളിയെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ BR അംബേദ്കറിനെ അപമാനിച്ചു എന്നത് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ 2 BJP MP-മാർ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കാണ് പാർലമെന്റ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. BJP-ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുകയും അവർ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളെ എതിർക്കുകയും ചെയ്താൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭം തന്നെയാണ് അവർ നടത്താറ്. വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വഴിതിരിയിക്കാനാണ് ഇത്തരം നടപടിയെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ അടവുമായി BJP രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വനിതാ MP-യെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അപമാനിച്ചുവെന്ന് സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത് JP നദ്ദയും കിരൺ റിജിജുവുമായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you, sir. Honorable Minister, Kiran Rijiju ji, Honorable Minister. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। यहाँ हाथ किसी एक दूसरे MP को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर। हमारे पास संख्या है, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी श्री राहुल गांधी जैसे अगर हाथ उठाना लग जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा सर। इसलिए राहुल गांधी जी के व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी सिर्फ संसद से नहीं, पूरा देश से माफी मांगना चाहिए सर। I appeal to everyone. I'll come to it. I appeal to everyone. We must engage in dialogue. We must ensure democracy prospers. Leader of the House. सभापति जी, जिस तरीके से संसद में संविधान पर चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, इनका कर्तृत्व 75 साल में
किस तरीके से संविधान के साथ इन्होंने तोड़ मोड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, ये भारत की जनता तक पहुंचा इस सदन के माध्यम से, जिसके कारण ये बौखला गए हैं, आपा खो बैठे हैं। और आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है और ये प्रिविलेज का विषय है। I have received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. और I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member Parliament. I am looking into it. जी, सभापति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सदन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है, उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। Rahul ji, Shri Tiruchi Shiva, point of order. Sir, Your point of order. sir, What? This Mr. is- Tiruchi Shiva. sir, this is one side. This is the version of one side, sir. There was a demonstration going outside, and Mr. Rahul Gandhi, the leader of opposition, in the other house. What is your point is a of order? very senior person, and he has complained that he was only opposed. We respect All all I know lady is- members. We respect every One woman second. in this country, All I sir. know is Nothing has happened of Honorable that, lady sir. member Nothing has happened of Konyak that, has sir. sought my We protection. respect women, sir. I have heard They her. don't respect even She Ambedkar. was They literally respect in women. tears. Whether it's a member of parliament or anybody in this country. The House Rahul Gandhi has made a complaint stands that he was adjourned only to meet opposed. at 11 a.m. on Friday, the 20th December